Hello students, in today's lecture we are going to discuss about MIP architecture, right? So we have already seen the SP architectures. Now we are in today's lecture we are going to understand what is MIP architecture, right? So let's begin. These are the details of MIP R2000 architecture. So what MIP architecture is all about? It's about the detailed discussions, or it's about the clarification of MIP's R2000 architecture, right? And the purpose of this is to give the favor of how all architecture has been designed, specified since the early 80s. और हमने इसे क्यों फ्लेवर दिया है, वाई वी हैव इंट्रोड्यूस MIP आर्किटेक्चर. वी हैव इंट्रोड्यूस MIP आर्किटेक्चर so that we can we can give favor, we can give thanks to that the design that has been specified in the early 890s. So it is different from Pentium load store architecture, right? जो Pentium ने load और store का architecture निकाला था, that is exclusively different from that architecture, right? Now the issue that rises is why we are using this. Why MIP architecture? See, the memory access slow a processor down. We know whenever we are trying to access the memory, the processor speeds get slowed down, and or in other words you can say कि processor जो है वो slow हो जाता है. So we add cache. So in order to speed up the processor speed, what we do, what is the alternative option we have? हमने कैच मेमोरी पढ़ा था ना भाई. कैच मेमोरी क्या करती है? एक फास्ट मेमोरी है. उससे व्हाट वाज द एडवांटेज? हम क्या करते थे, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मेन मेमोरी, द इंस्ट्रक्शंस विच इज़ बीन यूज वेरी फ्रीक्वेंटली बाय द प्रोसेसर इज स्टोर इनसाइड द कैच मेमोरी. भाई कैच मेमोरी में हमने क्या किया था, जो वो इंस्ट्रक्शन जो कि फैच जो है या वो डेटा जो हमारा प्रोसेसर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है, उसे मेन मेमोरी में स्टोर करने की जगह हमने कैच मेमोरी में डाल दिया था. उससे क्या हुआ था, हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो गई थी प्रोसेसर की. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मेमोरी एंड कमिंग बैक टू द प्रोसेसर, हम उसे जल्दी से वेरी स्पीडली कैच मेमोरी में से निकाल लेते हैं, क्योंकि उस कैच मेमोरी में वही डेटा रहता है. ओनली दोज डेटा इज प्रोवाइडेड बाय द कैच मेमोरी विच इज़ frequently used. So but that's not the only bring the average access time down for memory access. You see this, with the help of this we cannot actually bring down, or actually you can lower the memory access speeds, or you can lower or you can minimize the time of memory access. There are still times when processor is doing nothing while waiting for the memory access to complete. Many situations are there, right? This is not the only solution to the problem, right? There might be a you must have seen in so many cases when the processor is actually waiting for to memory access, and for that time the processor is really ideal. प्रोसेसर हमारा खाली होता था जब हमारा जो मेमोरी एक्सेस, जब प्रोसेसर है हमारा वो कोई काम नहीं कर रहा होता था. कब तक के लिए? वो सिर्फ मेमोरी एक्सेस के लिए वेट कर रहा था कि मेमोरी एक्सेस जैसे ही कंप्लीट होगा और तब मैं अपना काम शुरू करूँगा. फॉर दैट टाइम द प्रोसेसर इज़ रियली एम्प्टी, राइट? So we have to define all these drawback which is been mentioned by me above. We have to introduce a new architecture to outcome all those flaws which is been there in this above mentioned. जितने भी फ्लॉज मैंने आपको बताए हैं उन सब को आउटकम करने के लिए, उन सब को हील अप करने के लिए हमने एक नया आर्किटेक्चर डिफाइन किया, राइट? एंड by this architecture what we are doing in this load and store architecture, the addressing mode for every operand is fixed. इसमें क्या होता था, हमारा जो लोड स्टोर आर्किटेक्चर है इसमें जो एड्रेसिंग मोड होता है, हर ऑपरेंड का एड्रेसिंग मोड फिक्स होता था. क्या होता था? हर ऑपरेंड का एड्रेसिंग मोड फिक्स होता है लोड और स्टोर आर्किटेक्चर में, राइट? सो देयर इज़ नो बाइट फॉर एड्रेसिंग मोड इन्फॉर्मेशन. तो हमारे जो एड्रेसिंग मोड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए कोई बाइट नहीं होती थी. एंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल टाइप इंस्ट्रक्शन द एड्रेसिंग मोड फॉर ऑल द ऑपरेंड विल बी रजिस्टर मोड. और जितने हम जानते हैं वी ऑलरेडी डिस्कस इन द मोड्स ऑफ एड्रेसिंग, जिसमें कि हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल टाइप्स इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता था, द एड्रेसिंग मोड फॉर ऑल द ऑपरेंड विल बी रजिस्टर मोड. इनके जितने भी ऑपरेंड्स हैं हमारे अर्थमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में, जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन, जितने हमारे लॉजिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड नैंड, उसके लिए हम क्या करते थे, जितने भी ऑपरेंड होते हैं इनका जो है हमारा उनका एड्रेसिंग मोड क्या होता था? रजिस्टर मोड होता था, राइट?
So we make sure that there are enough register because everything end up in registers. हम जानते हैं कि whatever data is there, that is actually in the end is kept in the registers only, right? You know what is register? We have already discussed it so many times. Register is the place for storing the data. हमारा data registers होते थे, हमारे address register होते हैं, हमारे memory registers होते हैं. So what actually is happening, whatever data is there, it's ultimately end up into the register only now. We use register to maintain the data, right? We have address, address register, we have data register. What these registers are for? They are actually there to keep the instructions only. Instructions registers are there to keep the instruction inside it. So to get stuff to from the memory and in and out of the register, we explicitly instructions had that move data. Now since the data is stored inside the register, now in order to take the data, into the register or out from the register, or give the data, store the data into the memory, or take out the data from the memory, or in other words you can say write the data into the memory, or read the data from the memory, or store the data in the registers, or take the data from the register. What we use explicit instructions to move the data. We know that, right? So load instructions read the data from the memory and copy it to the register. अब हमारा load instruction क्या करता है? हमने इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, राइट? तो हमारा उसमें लोड इंस्ट्रक्शन क्या करता है? वो रीड करता है. क्या रीड करता है? डेटा को. कहाँ से? मेमोरी से. सो load instruction is actually reading the data from the memory, and once it read the data from the memory, then it copy it to the register. Obviously after reading the data from the memory, he has to keep that data inside something now. And what is that something inside which the data is being kept? It's register. So this is clear. So store instruction write the data from the register to the memory. Just like load instruction, what is the role of load instruction? Read the data from the memory. And write, what is the store instruction? Store means something, keeping, storing something inside that, like you store the clothes inside the almirah. So what if we are saying I'm storing the clothes inside the almirah. So what exactly we are doing? We are actually keeping the clothes inside the almirah. So similarly, if when we are saying storing the instructions, so what does the word store instructions do? It actually write the data, right? We in terms of register read and write only we use. हम read और write होते हैं वही denote करते हैं instructions को. तो जब हम उसमें कुछ डाल रहे हैं तो we use the write data, right? So store instructions write data from the register to the memory. This is clear? Any problem? No. So let's move further. See, the IMP R2000 is a load and store architecture. अब हमारा जो IMP R2000 है ये load और store architecture है. Why did I discuss this load and store instruction in so detail with you? Why I have explained you, this is the only reason. load और store instructions को ये समझाने का यही motive था मेरा, क्योंकि हमारा जो IMP R2000 है ये लोड और स्टोर आर्किटेक्चर ही है. तो लोड और स्टोर आर्किटेक्चर को समझने के लिए लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस का समझना बहुत ज़रूरी था. व्हाट डज द लोड इंस्ट्रक्शंस डू? लोड इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली रीड द डेटा. And store instruction, what does the store instruction do? It actually store the data. So read data, write. Storing data means writing the data. So read and writing data. So that's why we have understood store and load instructions. I think if you haven't understood earlier, so abhi I have explained you in a very simple way. I hope you have understood this. Now we'll discuss about registers. We already know what are registers. We have instruction registers, we have data registers. What these registers are for? But normally, if I've given a very layman example, if I have to provide you name, what do you do in the register? You study in the college, you have register. What actually you do in that register? You store the data inside the register. भाई आप रजिस्टर में लिख के क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं. और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो उन्हीं रजिस्टर खोल को आप क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? लोड करते हैं. सो दिस इज़ क्लियर टू यू व्हाट यू आर डूइंग. भाई एक बार आपने क्या किया? रजिस्टर में हमने स्टोर किया, लोड किया और फिर राइट किया. क्लियर?
So this is what the load and write is all about. So registers होते किस लिए हैं? What is the basic purpose of registers? So the basic motive or basic function of register is to store the data, read the data, right? This is clear. Now there are 30 to 32 bit register for non floating point operand. अब हमारे जितने भी operands हैं अलग अलग तरह के operands के लिए for different type of operands we have different bit register. For example जितने भी हमारे non floating points operands हैं, you understand floating points decimals में जो denote होते हैं, all those numbers which is indicated by decimals is termed as floating point. So non-floating point means non-decimal, which numbers that does not include decimal, non-fractional number. What type of register is being used for that? We use 32 bit register. See, integers are 32 bits, 2 complement, and address are 32 bit unsigned. So in code, the syntax used is $x, where x is a value of range 0 to 31. So what is the range of the x? It's going to be 0 to 31. I think that's all for today, and still if you have any problem, please feel free to ask. Thank you so very much.